Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay, 3 class students. Today we learn English class 3. Binish goes to Karachi and unit number 3. Okay, so let's start it. Open your book. So here is that. And the topic is Binish goes to Karachi. It means कि Binish Karachi जाती है at the airport. So airport, first of all we will start and do the reading of this chapter, and let's start it. Binish is going to Karachi to visit her grandparents. ओके बिनिश कराची जा रही है किस लिए? ग्रैंड पेरेंट्स मीन यानी अपने दादा दादी या नाना नानी से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, उन सैर करने के लिए वो कराची जा रही है. शी इज़ गोइंग बाय एरोप्लेन यानी वो जहाज़ के ज़रिए जा रही है. द एयरपोर्ट इज़ वेरी बिजी. बिजी मीन बहुत मसरूफ़ है यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है. द पोर्टर पुट्स हर सूट केस ऑन अ ट्रॉली. पोर्टर मीन जो वहाँ पर काम करने वाला होता है, जस्ट लाइक चौकीदार या पासबान या जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, उसने उसका वो सूट केस यानी जो कपड़ों वाला यू कैन सी इन द पिक्चर वो ट्रॉली में रखा. ही विल टेक इट टू अ कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट मीन जहाँ पर वो सारा सामान जाके रखते हैं वो वहाँ पर वो जाके रख देगा. The air hostess sees her ticket and takes her wheelchair to the aeroplane. Okay, air hostess ने क्या किया? उसकी टिकट चेक की और फिर उसकी व्हीलचेयर को एरोप्लेन पर ले गई. The pilot welcomes the passengers and tells them to put on their safety belts. पायलट ने सब पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को पैसेंजर्स, मुसाफिर वेलकम खुशामदीद कहा, एंड टेल्स देम और उनको बताया टू पुट ऑन देयर सेफ्टी बेल्ट. सेफ्टी बेल्ट मीन जो हिफाजती बेल्ट होती है जो हम एरोप्लेन में या किसी स्विंग्स में जब बैठते हैं तो वो सेफ्टी बेल्ट्स लगाते हैं ना, दीज आर कॉल्ड सेफ्टी बेल्ट्स, कि वो लगा लें. द एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे एंड टेक्स ऑफ यानी एरोप्लेन रनवे पे चला और टेक ऑफ उड़ गया. इट लैंड्स इन कराची आफ्टर 2 hours यानी 2 घंटे के बाद उसने कराची लैंड किया. बिनिश इज़ वेरी हैप्पी टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स. बिनिश बहुत ज़्यादा खुश थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलके. एंड द नेक्स्ट इज बिनिश मीट्स हर ग्रैंड फादर यानी वो अपने ग्रैंड फादर से कैसे मिलती है. बिनिश एंड हर ग्रैंड फादर आर टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन्स एंड पायलट्स. अब बिनिश और उसके जो दादा अबू थे वो किस बारे में बात कर रहे हैं या नाना अबू? वो एरोप्लेन्स और पायलट्स के बारे. पायलट्स किसको कहते हैं? जो जहाज़ को चलाता है. सो हु मेड द फर्स्ट एरोप्लेन दादा? आस्क्ड बिनिश. बिनिश ने पूछा कि सबसे पहला जहाज़ किसने बनाया था. द फर्स्ट एरोप्लेन वॉज मेड बाय द राइट ब्रदर. उसके दादा अबू ने कहा कि जो सबसे पहला जहाज़ था वो राइट ब्रदर्स ने 1903 में बनाया था. उसके आंसर हर ग्रैंडफादर, आंसर मीन जवाब दिया उसके दादा अबू ने. आई विश आई कैन फ्लाई अ प्लेन वन डे सेड बिनिश. बिनिश ने कहा कि मेरी भी ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, कैन फ्लाई कि मैं भी उड़ सकती हूँ एक प्लेन, एक जहाज़ में, कि मैं भी एक दिन एक जहाज़ में फ्लाई कर सकती हूँ. Of course you can. Let me tell you about the first woman pilot. Answer her grandfather. Answer यानी उसके दादा अबू ने जवाब दिया क्यों नहीं, तुम भी कर सकती हो, मुझे तुम्हें फर्स्ट वुमेन पायलट के बारे में बताने दो. एमी जॉनसन द फर्स्ट वुमेन पायलट यानी एमी जॉनसन जो सबसे पहली जो पायलट थी उसके बारे में उसके दादा अबू उसको स्टोरी सुनाते हैं. हर नेम इज़ एमी जॉनसन. वन डे शी गेट्स हर्ट इन स्कूल when a football hits her lips. एक दफ़ा क्या हुआ कि get hurt, उसको चोट लग गई, उसको तकलीफ हुई. कब कैसे हुई? when a football hits her lips, जब एक फुटबॉल उसके लिप्स पे, उसके होंठों पर आकर लगा. the children make fun of her. बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया. make fun मजाक उड़ाया. and call her ugly Amy यानी उसको कहा कि तुम तो गंदी एमी लग रही हो. she does not like school. वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी. One day she sees a film about aeroplanes and wants to be a pilot. एक दिन उसने एक मूवी देखी एरोप्लेन्स के बारे में, अब वो चाहती थी कि वो एक पायलट बने. She studies hard and goes to the university.
یعنی اس نے بہت محنت کی, ہارڈ, بہت سخت محنت کی, اور وہ یونیورسٹی بھی پہنچ گئی. دین شی ورکس ان لنڈن نیئر این ایئر فیلڈ, یعنی تب اس نے لنڈن میں بھی کام کیا جو کہ ایک ایئر فیلڈ کے نزدیک تھا, یعنی جہاں پر پریکٹس وغیرہ کرواتے تھے پائلٹس کو بھی اور ایئرپلین وغیرہ کی بھی. At first people laugh at her when she tells them she wants to be a pilot. At first یعنی پہلے پہلے people laugh ہنستے تھے at her اس پر کہ وہ جہاز چلائے گی. She wants to be a pilot, وہ ایک پائلٹ بننا چاہتی ہے. Everyone says only men can fly. ہر کوئی اس کو کہتا تھا کہ صرف آدمی پائلٹ بن سکتے ہیں, صرف وہ جہاز چلا سکتے ہیں. Amy works very hard and she passes her test. اس نے بہت محنت کی اور اس نے اپنے ٹیسٹ پاس کر لیا. She becomes a pilot. She flies from England to Australia. یعنی اس نے انگلینڈ سے آسٹریلیا تک فلائی بھی کیا, جہاز بھی چلایا. On the way she stops in Karachi for some time. یعنی راستے میں وہ کچھ دیر کے لیے کراچی بھی رکی. Thank you دادا, one day I will also become a pilot, said Binish. اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ دادا, اور کہا کہ میں بھی ایک دن پائلٹ بن جاؤں گی. Okay? Now another story is there. Grandmother tells a story. Grandmother comes in with some tea and biscuits for Binish and her grandfather. یعنی اتنی دیر میں جو گرینڈ مدر تھی, جو اس کی دادو تھی, وہ اس کے لیے بسکٹس اور چائے لے کر آئیں. Let Dada rest now and I will tell you a story about a little girl, said her grandmother. اب اس نے دادا سے کہا کہ آپ ریسٹ کریں, اب میں اس کو ایک سٹوری سناتی ہوں بنش کو. So Little Red Riding Hood. اوکے, Little Red Riding Hood یعنی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی یہ کہانی ہے. Riding Hood is the name of the girl. This story is about a little girl who loves to wear red clothes. اب اس کو Little Red Riding Hood کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کو ریڈ کپڑے پہننا بہت پسند تھے. اوکے, and everybody calls her Little Red Riding Hood. اور سب لوگ اسے وہ Little Red Riding Hood کہتے تھے. One day her mother tells her, ایک دن اس کی ماما اس کو بتاتی ہیں, your grandmother is not well, کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. Take this cake and fruit for her. اور اس کی ماما نے اس کو کہا کہ تم اپنی گرینڈ مدر کے لیے یہ فروٹس اور کیک لے جاؤ. Be careful, do not stop or talk to anybody on the way. Be careful یعنی بہت احتیاط سے جانا اور راستے میں رکنا مت, اور کسی سے بھی بات مت کرنا. Way, on the way, راستے میں. Little Red Riding Hood puts the cake and fruit in a basket. یعنی اس نے اپنی وہ ٹوکری میں رکھ لیے وہ کیکس اور فروٹس. And goes to her grandmother's house. اور اپنے دادوں کے گھر جانے لگی. On the way she stops to pick some flowers for her grandmother. راستے میں وہ رکی کس لیے؟ کہ وہ اپنی گرینڈ مدر کے لیے, اپنی دادی اماں کے لیے کچھ پھول توڑ لے. Here she meets a big bad wolf. یہاں پر وہ ایک بڑے برے wolf سے, بھیڑیے سے ملی. The wolf asks her where she is going. کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ I am going to my grandmother's house in the forest, says Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood نے کہا کہ میں تو اپنی گرینڈ مدر کے گھر جا رہی ہوں. In the forest, جنگل میں. The wolf takes a short cut to grandmother's house. wolf نے کیا کیا؟ وہ ایک شارٹ کٹ لیا کہ وہ جلدی سے گرینڈ مدر کے ہاؤس میں پہنچ جائے. He locks grandmother in the cupboard. اس نے کیا کیا کہ ان کی گرینڈ مدر کو کبرڈ میں لاک کر دیا, الماری میں. Wears her shawl and glasses and gets into her bed to wait for Little Red Riding Hood. اب اس نے کیا کیا؟ wears پہن لیے, ان کی شال بھی, ان کی گلاسز بھی, and gets into her bed, اور ان کے بیڈ پر بھی لیٹ گیا, to wait Little Red Riding Hood کا انتظار کرنے کے لیے. She knocks on the door. اس نے دروازے پر دستک دی اب اس گرل نے. Come in, cries the wolf. wolf چلایا, آ جاؤ. Grandmother, what big ears you have, says Little Red Riding Hood. یعنی Little Red Riding Hood نے کہا کہ آپ کے کتنے بڑے بڑے کان ہیں. I want to hear you better, my dear, says the big bad wolf. اب big bad wolf نے کیا کہا کہ میں تم سے بہتر سننا چاہتی ہوں, اس لیے میرے کان بڑے ہیں. Next, Grandmother, what big eyes you have, says Little Red Riding Hood. اب اس نے پھر کہا کہ آپ کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں دادی اماں. I want to see you better, my dear, says the big bad wolf. یعنی اگین اس big bad wolf نے کہا کہ میں تمہیں بہتر طور پر دیکھنا چاہتی ہوں.
Grandmother, what big teeth you have. आपके teeth कितने बड़े हैं? Says Little Red Riding Hood. I want to eat you, my dear, says the big bad wolf, and jumps out of the bed to catch her. वो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ, और वो जल्दी से उसके ऊपर जंप की, उसके ऊपर छलांग लाई उसको पकड़ने के लिए. Little Red Riding Hood screams and run outside. वो चिल्लाई, screams चिल्लाई खौफ से और बाहर भाग गई. A woodcutter is cutting wood nearby. woodcutter कहते हैं लकड़हारे को जो लकड़ियां काटता है. वो nearby पास ही वो लकड़ियां काट रहा था, cutting woods. He rushes to kill the wolf with his axe. axe कहते हैं कुल्हाड़ा जो उसके हाथ में होता है जिसे वो लकड़ियां काटता है. rushes तेजी से भागा. टू किल कत्ल करने के लिए. द वुल्फ वुल्फ भेड़िए को, यानी वो जल्दी से उस भेड़िए को कत्ल करने के लिए भागा. दे टेक ग्रैंडमदर आउट ऑफ द कबर्ड एंड एवरीबॉडी ड्रिंक्स टी एंड ईट्स द फ्रूट एंड केक. दे टेक ग्रैंडमदर आउट ऑफ द कबर्ड. उन्होंने ग्रैंडमदर को कबर्ड से बाहर निकाला और सब ने चाय भी पी और फ्रूट और केक भी खाए. What a good story, Dadi, said Binish. Binish ने कहा कितनी अच्छी story थी. And look, I have made some new red clothes for you, said grandmother. Grandmother ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए और new red clothes बनाए हैं. Thank you, Dadi. Now I will look like Red Riding Hood. Okay, so this is all about the story. Next we will do the exercise of this chapter. So here is that. This is the book work. Okay, open the book work and the page number is 13. First of all we will do the matching. Okay, you should have a pencil in your hand to complete this matching. And the first of all, look at the number 1. The number 1 is runway. So you will match the runway with part C. That is a long narrow strip of ground on which an aeroplane takes off from the land on. Okay, you will match the one with the C. Look at the number 2, the luggage. Luggage कहते हैं सामान को. So you will match the 2 with E. The part E is bags or cases used to carry things when traveling. Next one is 3. 3 number is trolley. You will match the trolley with the part D. Small vehicle with wheels used for carrying things. Next one is conveyor belt. So the conveyor belt you will match the 4 with the A. A moving band used to move things from one place to another. Number 5 is porter. So what is a porter? The meaning is porter. You will match the porter with the B. A person whose job is to carry other people's bag. Okay, so we have completed our part A. Now look at the part A that is on page number 14. Number these sentences. Okay, open the page number 14 of your book, and that you have to numbering that which sentence will come in the first, which will come in the 2 and 3 and 4. So first one, she studies hard and goes to university. This is part, this will is number 3. Okay, ये number 3 पर आएगा. She flies from England to Australia. This is number 5. Amy is hit by a football in school. This is number 1. यानी सबसे पहले ये हुआ था in order. She passes her test. This is number 4. She sees a film about aeroplanes. This is number 2. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. Next part B, that is on page number 15. Open the page number 15. These are the question answer. We have to do it. The first one is question, who was the first women pilot? And you will write the answer like this, students. Amy Johnson was the first women pilot. Okay, number 2, why did people laugh at her? People laughed at her because she was hurt a football, hit her lips, and she looked ugly. Okay, this is done. Now we have completed our question answers. So the next one is make sentences. You have to make the sentences just like catch. What is the meaning of the catch? Catch means pakadna. Pick, pick, uthana, like, pasand karna. So student will write the help of the, just like you can make the sentence of the catch is, my brother catches the ball. Pick, pick me up. Like, I like to eat bananas. Okay, you can make these type of sentences yourself also. So the next one is circle the true and false. Okay, you have to circle the true and the false, and the first one is
You open the book, the page number is 18 of your book, and here is the true and false. The part B, circle true or false for each sentence, and the first one is the little girl loved to wear red clothes. So is it true? Very good, this is true. Please take some vegetables for your grandmother, said her mother. उसकी मामा ने ये कहा था कि vegetables ले जाओ. No, this is false. Little Red Riding Hood stops to eat the cake. क्या वो केक रुकने के लिए खाने के लिए रुकी थी? No, this is also false. So Little Red Riding Hood remember what her mother had said. Okay, उसकी मामा ने क्या कहा था? So this is also number 4 is false. Number 5, the wolf had big teeth and he wanted to brush them. No, this is also false. Okay, clear? Next we have to do the part C. Match the sentences. This is also on page number 19. You have to do the matching. So the first one is the woodcutter killed. The woodcutter killed the wolf. Okay, the woodcutter killed. You will match the wolf. The grandmother was sick. You will match with was sick. There was cake and fruits in the basket. You will match in the basket. The wolf wore a shawl and glasses. A shawl and glasses. The little girl loved red clothes. Yes, the little girl loved red clothes. So here's the copywork, students. You have to write down the words meaning on your journals. Quickly make sure journal is ready and write down these words meaning. So first of all, there is passenger, and the English meaning is traveler, and the Urdu meaning is musafir. Okay, next is happy. Happy, cheerful. It means Urdu meaning is khush hona. Ugly, unattractive. It means bura lagna, bhadda lagna, acha na lagna is called ugly. Hurt, hurt is painful, takleef hona, dard hona. Cries, cries is weeps, rona, chillana. Okay, I am also telling you the Urdu meaning as well. You have to note down on your journals. Make sentences with teacher help. So first of all, there is a visit, ticket, football, where, jump. So first visit. I visited the Canada last year. You can make the sentences like this. You can make your own sentences also, students. Okay, tickets. The officer checked the tickets. Football. My brother loved to play football. Wear. I always wear neat and clean uniform. Okay. Next is jumps. I jumps on the bed. Okay, you can make all these type of sentences yourself. You can make your sentence also. So here is the copy work again. We have the question answers. The first question on your book, the page number 19, and the question number 1 is on your book is, what does Little Red Riding Hood's mother give her? यानी उसकी मामा ने उसको क्या दिया था? And the answer is Little Red Riding Hood's mother gave her cake and fruit for her grandmother. Okay, number 2 is, why does Little Red Riding Hood stop on the way? वो रास्ते में क्यों रुकी? And the answer number 2 is, Little Red Riding Hood stopped on her way to pick some flowers. यानी कुछ flowers इकट्ठे करने के लिए रुकी. And the question number 3 is on your book is, what does the wolf do at grandmother's place? यानी वो grandmother की जगह पे क्या कर रहा था? And the answer number 3 is, the wolf locks grandmother into the cupboard, wears her shawl and glasses, and gets into the bed to wait for Little Red Riding Hood. Okay, the question number 4 is, who kills the wolf? Wolf को किसने मारा? And the answer number 4 is, the woodcutter killed the wolf. Okay, the woodcutter killed the wolf. Clear? Now we have completed our chapter. Okay, students, unit number 3 is complete. Take care and Allah Hafiz.